Hello students, this is Dr. Sheth. This video is in Hindi come English and will give you a deep understanding of the topic. But if you want just a quick crash course like revision, you must see other videos on this topic on this channel. For notes, MCQs and special questions for NEET, see the link given in the description below. So let's get started. Arteriosclerosis. Sclerosis means hardening. Let's see what happens here. Hardening and loss of elasticity of the arteries is called arteriosclerosis. Okay, this is the word is similar to atherosclerosis, but लेकिन ये अलग है. इसमें क्या होता है? Calcium salts get precipitated along with cholesterol to form plaques. लेकिन ये lumen के अंदर नहीं होते. It happens in the walls of the arteries. So calcification of the plaques makes the walls of the arteries stiff and rigid. कड़क हो जाती है या नॉन इलास्टिक हो जाती है. So they become more prone to rupture and tear or aneurysm. Okay? So arteries का elasticity कम हो जाता है, उसके वजह से they can rupture because of the pressure inside the arteries. This is called arteriosclerosis. It is hardening and loss of elasticity of the arteries mainly because of deposition of calcium salts. Okay? Now what is an aneurysm? It is an abnormal widening or ballooning, मतलब फूलना या फूल जाना of a portion of an artery due to weakness in the wall of the blood vessel. मतलब arterial wall weak होने के वजह से a part of the artery में suddenly bloat or balloon out. An aneurysm means this balloon-like part जो abnormally swell up हो जाता है that can rupture and cause bleeding. It happens commonly in arteriosclerotic arteries. जहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा है, जहाँ हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, वहाँ एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं एंड दे कैन रप्चर एंड कॉज सीवियर ब्लीडिंग. Congenital heart disease. Actually this is not really part of your NEET syllabus, but it's very important, तो हम शॉर्ट में करेंगे. Now what is a congenital heart disease? This is a defect or disease of the heart which is present since birth. That is a congenital heart disease. It may be due to many different errors in the development of the heart. Embryonic stage में, especially before 3 months of age, अगर some error in development happens, so usually the child does not survive. लेकिन if this happens later on, or if it is a mild defect, छोटा सा abnormality है, then the child may survive and the child is born with a defect in the heart. This is called congenital heart disease. The causes can be genetic. It could be because of infections in the pregnant mother or chromosomal or abnormalities. Okay. Now some common congenital heart disease, जिसमें heart disease होते हुए भी बच्चे survive कर सकते हैं. So ये हमें बच्चों में देखने मिलेंगे. Now if the congenital heart disease is very severe, so the embryo or the fetus or maybe the newborn child will die, which means हम ये population में नहीं देखेंगे. So यहाँ पे हम जो discuss कर रहे हैं, they are generally milder varieties of congenital heart disease which we can see in the population. For example, PFO or a patent foramen oval. Between the two atria there is a wall, the interatrial wall, and वो embryonic stage में बन जाता है. Sometimes that wall में hole रह जाता है and that is called the patent foramen oval. Patent मतलब जो open रह गया है वो. Now in patent foramen oval we expect that the blood between the right side and the left side will mix. मतलब right atrium और left atrium में mix होगा. Usually this does not happen because the pressure in both the sides are equal. So a PFO usually can be asymptomatic even in the adult. अक्सर लोगों को इससे तकलीफ नहीं होती. पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस. अभी इसके लिए आपको डक्टस आर्टीरियोसिस क्या है ये हमारे फिजियोलॉजी के नोट्स में देखना पड़ेगा या फिजियोलॉजी के वीडियो में देखना पड़ेगा. बट इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा इन द फीटस. और ये नॉर्मली आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न उसके फर्स्ट ब्रेथ के बाद ये
कनेक्शन बंद हो जाता है. But if somehow if the child does not breathe well, then the blood does not go into the lungs properly, and then blood from the pulmonary artery has to go to the aorta. तो इसकी वजह से ये डक्टस आर्टेरियोसस का कनेक्शन इवन आफ्टर बर्थ खुला रहता है. दैट इज कॉल्ड पीडीए. अब पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड अगर एओर्टा में जाएगा तो नेचुरली देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड द चाइल्ड विल गेट मिक्स्ड ब्लड which will be partially hypoxic. Okay, so that is PDA. This is a type of congenital heart disease. VSD और a ventricular septal defect, मतलब टू वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है उसमें इनकम्प्लीट सेप्टम होता है, जैसे कुछ रेप्टाइल्स में होता है. बट इफ इट हैपन्स इन ह्यूमन बींग्स इट इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल, बिकॉज यहाँ राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर डिफरेंस होता है. इफ देयर इज अ VSD, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल में हायर प्रेशर होता है. अगेन देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड. Okay, so although this is not there in your syllabus, I am doing it here to explain to you what can happen in a congenital heart disease, and that there are some congenital heart diseases जो mild हो सकते हैं and the patient can survive. Now अगर आपने कभी सुना होगा तो there are a lot of mothers who might come with this complaint to a doctor that मेरे बच्चे के हार्ट से आवाज आ रही है. Now what she is referring to is probably a murmur or abnormal heart sound. Why this happens? Because ये जो abnormal hole रह गया है हार्ट में, उसके थ्रू जब ब्लड पास होता है तो there may be an abnormal heart sound. अगर आप कान छाती पे लगाओगे बच्चों के तो maybe you can even hear that. So when a doctor wants to explain to this mother के what is the problem, उसको क्या बताना पड़ेगा? That your child has a hole in the heart. Now normally this will break down the mother, but when the doctor explains के this is common in some children and either it can be treated by surgery or even a person can live with it, then the mother gets some reassurance. So this is in short about congenital heart diseases. There are thousands of different congenital heart diseases. I have only given these three as an example to make you understand that a person can survive even with a heart defect. Heart murmurs. We just discussed what is a heart murmur. These are abnormal sounds from the heart which are heard through the stethoscope. जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है नॉर्मली ही गेट्स द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड द सेकंड हार्ट साउंड. लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आवाज है देन दैट इज कॉल्ड अ मर्मर. दे आर यूजुअली ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ द हार्ट or the valves due to causes like congenital heart disease or infection of the valves, etc. Again, this is not in your NEET syllabus. Edema or puffiness, this is important. Fluid accumulation in the tissues. Tissues में जब fluid भर जाता है resulting in local or generalized swelling of the tissues of the body is called edema. Causes. Fluid tissues में कब भर सकता है? Usually part of the fluid returns to the circulatory system via the lymph capillaries. अगर वेनस सिस्टम में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या लिम्फेटिक्स में प्रेशर ज़्यादा है तो ये फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न नहीं हो पाएगा बैक टू द सर्कुलेशन, फिर वो टिश्यूज में ही जमा होगा. दिस इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ इडिमा. ओके, नाउ व्हाट कैन कॉज दिस? या वेनस सिस्टम में प्रेशर कब बढ़ सकता है और व्हाट इज द अदर कॉज? नाउ यू रिमेंबर BCOP, blood colloidal osmotic pressure. In the blood there are proteins and one of the proteins is albumin. सबसे ज़्यादा मात्रा में albumin मिलता है and albumin is a colloid and it exerts colloidal osmotic pressure in the blood. इसके वजह से the blood is able to hold on to its liquid. Plasma जो blood vessels के अंदर रहता है it is because of albumin and some other electrolytes
जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, एंड दैट पुल्स द फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड वाया द कैपिलरीज और वाया द लिम्फ कैपिलरीज। अगर एल्बुमिन लेवल्स कम है, जैसे लिवर डिजीज में हो सकता है या क्वाशियोरकर में हो सकता है बिकॉज ऑफ malnutrition or because of liver disease, so the blood colloidal osmotic pressure will decrease, and the blood, instead of remaining in the blood vessels, उसमें से प्लाज्मा निकल के टिश्यूज में चला जाएगा, and this is called edema. One more cause is congestive heart failure. What is this? Congestive heart failure is when the heart fails and there is back pressure on the venous side of the heart, and this can also cause increase in the lymphatic pressure and seeping of fluid. Okay, आपने filariasis में भी देखा होगा that in filariasis the lymph nodes are infected, the capillaries of the lymphatic system get blocked, and there will be edema or swelling which is called elephantiasis. Okay, so that is about edema, and you must know the causes of edema. High blood pressure or hypertension. Now what is blood pressure? It is a pressure or the tension exerted by the circulating blood on the walls of the blood vessels, especially of the arteries. Blood pressure तो veins में भी होता है, लेकिन जब हम normally blood pressure की बात करते हैं तो we are referring to the arteries, that also mainly the large arteries. So blood होने के वजह से, एक liquid होने की वजह से उसकी arteries पे दबाव आता है, और वो दबाव which the blood exerts on the wall of the arteries is called blood pressure. Now this pressure is generated by one, the pumping action of the heart, वो force से करता है, and elasticity of the blood vessels. Elastic है तो वो क्या करती है, उसे प्रेशर को रोकने की कोशिश करती है, और प्रेशर में आर्टरीज फैल नहीं जाती क्योंकि वो इलास्टिक है. So what happens? The pumping of the heart forces blood into the arteries, and arteries जो इलास्टिक है वो उसको जकड़ के रखना चाहती है ब्लड को, and that is why pressure is generated, one by the pumping action of the heart and second of the elasticity of the blood vessels. Now how do you measure blood pressure? It is by a sphygmomanometer. ये एक मशीन का नाम है, ये आप डिटेल्स मेडिकल में पढ़ोगे, but you must know the name, sphygmomanometer. Manometer is, you know, a pressure guide, and a sphygmomanometer is a human pressure recording machine. Normal blood pressure इसमें जब आप measure करोगे तो generally you will hear the term 120 by 80 millimeters of mercury. यहाँ 120 millimeters है systolic pressure and 80 millimeters of mercury है diastolic pressure. This is the average normal pressure in a human being. Systolic मतलब when the heart contracts, तो force से blood जाता है, naturally arteries में blood pressure बढ़ेगा, तब होता है 120 millimeters of mercury. And diastole मतलब जब heart relax करता है, so the amount of blood being pushed is less or practically not there. तो फिर सिर्फ थोड़ा बहुत blood जो arteries में बचा है उसी का pressure आता है, that will naturally be low, that is around 80 millimeters of mercury. Okay? So 120 by 80 millimeters of mercury is the average blood pressure in a normal human being. अब hypertension क्या है? Hyper means high and tension means the tension or pressure of blood. So hypertension is a chronic medical condition in which blood pressure in the arteries is elevated beyond normal. Normal से ज़्यादा pressure, जहाँ we will define it as hypertension if the pressure is more than 140 systolic and more than 100 millimeters mercury diastolic. अभी अगर ये 130 है या 90 है तो यूजुअली इसकी कोई साइड इफेक्ट्स होती नहीं बॉडी पर, तो उसे ट्रीट नहीं किया जाता है. सो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जब सिस्टोलिक 140 से ऊपर या डायस्टोलिक 100 mm से ऊपर जाता है, देन वी कॉल इट हाइपरटेंशन एंड इट शुड बी ट्रीटेड. ओके, नाउ ये ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई बीपी? देयर आर मेनी कॉजेज, but we have to know two important groups of causes. One is lifestyle disorders or disorders related to the diet. Example, high salt intake,
mental stress, obesity, high cholesterol, tobacco intake, all this can cause high blood pressure. उसके अपने अपने mechanism है which you need not know, but ये salt intake is very important. हमने ऊपर जो बताया था in the chapter of edema कि salts के वजह से and proteins के वजह से ब्लड में कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहता है और ये ब्लड या प्लाज्मा के लिक्विड को ब्लड के अंदर ही रखता है, उसे बाहर जाने नहीं देता है टिश्यू में. Now this is very necessary to maintain blood volume. So salts and adequate amount of albumin is necessary to maintain blood volume. लेकिन अगर salt बढ़ गया, यूजुअली आपके खाने में बढ़ने से होता है, then what will happen? जरूरत से ज़्यादा ब्लड खींचेगा into the blood vessels, the volume of blood will increase and that will increase the blood pressure. Okay? Renal diseases. Now हमने ये चैप्टर अभी तक किया नहीं है, लेकिन there are renal diseases अगर होता है तो one of the important thing which happens is the amount of urine formed decreases. यूरिन कम बनता है, मतलब पानी हमारे बॉडी से निकलता नहीं है या कम निकलता है. Now if that happens, the water will accumulate in the body, in the blood vessels. तो इससे भी आपका blood volume बढ़ेगा और blood volume बढ़ेगा तो pressure बढ़ेगा. So the causes of high BP, lifestyle disorders like high salt intake, mental stress, obesity, high cholesterol, tobacco, etc. and different types of renal diseases. I hope you have understood this topic thoroughly well. If you want a quick crash course like revision, you can refer to other videos on the same channel. If you have any queries, you can put them in the comments below. For more such videos, like this video and subscribe to this channel.